Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. गुरु कथा श्रवण कीर्तन 10 जुलाई शुक्रवार, सावन कृष्ण पंचमी तिथि। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बहुत विस्तार से शास्त्र प्रमाण के साथ अपने ग्रंथ श्री चैतन्य हिज लाइफ एंड एसोसिएट्स गौर पार्षदावली में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो जीवन चरित्र दिया, मैं वहां से पाठ कर रहा हूं। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी appeared in 1500 AD. 520 years ago he appeared, and we are talking today about him. That shows his impact. That is the impact that is remembered even more than 500 years afterwards. As the son of Venkata Bhatt in the town of Srirangam in South India. Srirangam is in Karnataka, and the exact place of birth of Gopal Bhatt Goswami is Belagundi. Belagundi is a village close to Srirangam. According to Narhari in Bhakti Ratnakar, Mahaprabhu gave Gopal Bhatt a dream vision through which he could witness all of his Navdeep pastimes. Though Gopal was an eternal associate of Krishna, he appeared in a faraway place in order to make a special contribution to Lord Gauranga's pastimes. Thus, even though he was living too far away to know anything about Lord directly, he was still able to know long before he met the Lord in person that he had appeared and taken sannyas. As a member of his Vrindavan entourage, Gopal Bhatt did not particularly like the Lord's appearance as a sannyasi. This austere form distressed Gopal, who was thus crying alone when the Lord appeared to him and gave him this vision of his form as a householder in Navdeep Dham. तो महाप्रभु के गृहस्थ रूप को गोपाल भट्ट गोस्वामी पूजा करते हैं। उनके संन्यास वेश को देख के उनके दिल में बहुत विरह होती है, इसलिए महाप्रभु के बारे में उनको पहले से पता लग गया था कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। Gopal was overwhelmed with astonishment at seeing the Lord's beauty, and he fell down at his feet. When he looked up, the Lord had transformed into his sannyas form again. So Mahaprabhu gave him darshan in his grihastha vesh. Calming Gopal, he gave him some instructions and then foretold that he would go to Vrindavan before long and there make disciples who would spread his teachings throughout the world. The Lord then embraced Gopal and drenched him in his tears. He then told Gopal
to keep all these revelations a secret. He then disappeared, leaving Gopal in a state of intense joy. The Lord's teachings to Gopal's father. Not long thereafter, in 1510, Mahaprabhu made his auspicious entrance to the pilgrimage city of Sri Rangam. So Mahaprabhu in his South India tour visited Sri Rangam. Year 1510. He was invited by Venkata Bhatta, a Vaishnava of Sri Sampradaya, to spend the 4 months of the Chaturmasya in his house. So today we are hearing how Mahaprabhu passed 4 months of Chaturmas at one place. So one has to stay at one place during Chaturmas, especially sannyasis. So Mahaprabhu observed Chaturmas in Venkata Bhatta home, where Gopal Bhatt was 10 years old boy. In fact, knowing him to be a strict Vaishnava, Mahaprabhu accepted his invitation. Lord's pastime of coming to Sri Rangam and staying at Venkata Bhatta home was to give his mercy to Gopal Bhatt and his family. For the Lord knew that Gopal, his eternal companion, had appeared there. At this time, Gopal Bhatt was still a young boy. He was fortunate enough to be able to serve the Lord by massaging his feet. So, this is the only reference where we find Gopal Bhatt Goswami. For 4 months, he was serving Mahaprabhu directly. He got the seva of massaging Mahaprabhu's lotus feet. Just imagine. Beyond our imagination. Even though he was satisfied with Venkata Bhatta and his family's service, the Lord observed that Venkata had an element of pride in his object of worship. He believed that his worshipable deity, Lakshmi Narayan, was the supreme worshipable object and that Narayan was the source of all other incarnation, including Krishna, Rama and Nrsimha. His reasoning was that Narayan is never born, he is Aja, while Krishna and Rama take birth in the world. He thus thought Mahaprabhu worships Krishna, the incarnation of Narayana, while we worship Narayana, the source of all incarnations. As Madhusudan is the destroyer of false pride, Mahaprabhu finally decided one day that he would do so for Venkata. Darpahari Madhusudana. So Mahaprabhu decided one day that he will destroy the false pride of Venkata Bhatta. He asked him in a mild humored, witty tone, Venkata, I hear that no one is equal in opulence to your Lord Narayana. The same is true for your worshipable goddess Lakshmi Devi. On the other hand, the object of my worship, Krishna, has no opulences of any kind. He wears garlands of wild forest flowers and uses peacock feathers for decoration. He is the son of Nandago and spends his day grazing the cows with other cowherd boys. My worshipable goddesses, the gopis, are also nothing but poor cowherd girls. I wonder, therefore, why your worshipable Lakshmi Devi came to Vrindavan to perform austerities in the hope of gaining Krishna's company in the Rasa Leela. Venkata immediately answered, what's wrong with that? Radha's beloved Krishna is not different from Lakshmi Devi's husband Narayan. Mahaprabhu answered, I'm not saying
that there is any fault. I agree that from the transcendental point of view, Krishna and Narayan are identical. The difference between them is based on the variety of rasa, melo, transcendental taste or mood. When the Lord performs pastimes of opulence, he is Narayan. When he performs pastimes of sweetness, he is Krishna. He who is Radha in Krishna's pastimes is Lakshmi in the pastimes of Narayana. Thus, when Lakshmi performs austerities to have the association of Krishna, there is no question of her breaking her vows of fidelity to her husband. Thus, she went to perform these austerities in Vrindavan. But I have another question for you. Why, even after trying so hard through such penances to enter Krishna's Ras Leela, was Lakshmi still unable to do so? Venkata was terribly distressed at being unable to give Lord an answer. Mahaprabhu observed his distress and tried to pacify him by saying, "You yourself said that Narayan and Krishna are identical from theological point of view, but that the superiority of Krishna is determined by an analysis of divine sentiments. Narayana is involved in 2.5 of 5 principal rasas: Shant, Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhur. These are the 5 rasas. So Narayana has 2, Shant, Dasya and half Sakhya. Whereas Krishna is experienced through the complete manifestation of all 12 rasas, the 5 principal and 7 secondary sentiments. Since Narayan Leela is primarily one of opulence and majesty, his principal devotee is Lakshmi, who also worships him in the appropriate mood of awe and reverence, Aishwarya Bhav. Lakshmi worships Narayana in Aishwarya Bhav, in the mood of awe and reverence, AWE, awe. The same Lakshmi Devi is Radhika in order to heighten the experience of romantic love. Unless one follows in the footsteps of Radha and her expansions, the gopis, who are the repositories of the erotic sentiment, then it is impossible to relish Krishna's sweet qualities, such as those virtues which are particularly inspiring for the romantic mood of love. The reason for Lakshmi Devi's failure is that she did not follow in the gopis' footsteps, but continued to perform her austerities in the mood of awe and reverence. As a result, she repeatedly found herself in the company of Narayana and never in that of Krishna. By way of contrast, the Shrutis followed the gopis in the Rag Marga and so were ultimately able to achieve Krishna's service in the erotic mood. As long as one continues to think of Krishna in majestic terms as Lord and Creator of the universe, one cannot possibly worship in the spirit of Raganuga Bhakti. Krishna has one extraordinary characteristic, and that is, by his sweetness, he attracts the minds of entire world. So Krishna, by his sweetness, attracts the minds of the entire world. By taking on the mood of Braj Gopis, one can attain to his lotus feet. The people of Vraja have no idea that Krishna is the Lord and Creator of the universe. Some think of him as their son and even tie him to a mortar, while others take him to be their friend and climb on his shoulders.
The people of Braja only know him as the son of Nanda, whereas in the attitude of awe and reverence, the devotee does not have a concept of such a relationship to him. One who takes the attitude of a resident of Braja will attain Krishna as the son of the king of Braja in Vrindavan. This is from Chaitanya Charitamrita 2.9, 127 to 131. So when the gopis, the objects of my worship, were abandoned by Krishna in the Ras Leela, they began to cry. In the intensity of their distress at not seeing him, Krishna came to them in the form of Narayana, but the gopis simply paid their obeisances and moved on in search of Krishna, showing absolutely no interest in him as a lover. When Radharani stood before the disguised Krishna, however, he could not maintain the four-armed form, but once again appeared in his form as the holder of the flute. Such is the power of Radharani's love. This is from Bhakti Ratnakar 5.624 to 629. Nandanandan Krishna is the avatari. Nandanandan Krishna is the avatari or source of all incarnations. Avatari means source of all incarnations. So Nandanandan Krishna is the source of all incarnations. Narayan, Ram, Nrsimha are all his incarnations and expansions. Krishna is Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. As he is the Supreme Personality of Godhead, his other divine forms are also given the appellation of Bhagavan. He alone, however, can be called Swayam Bhagavan or primeval Supreme Lord. Chaitanya Charitamrita 1.2.88. Ete chans kalapuns Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Bridayanti Yuge Yuge. Srimad Bhagavatam 1.3.28. Ved Vyas in Bhagavatam has said, Ite chans kalapuns, arthat, all of the previously mentioned forms of the Lord are either plenary or partial expansions. Krishna alone is the original personality of the Godhead. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna alone is the original personality of Godhead. We have to understand this point thoroughly. Krishna alone is the original personality of Godhead. Krishnastu Bhagavan Swayam. He and his expansions appear in every age to bring joy to this world when tormented by the enemies of the gods. This is Srimad Bhagavatam 1.3.28. So, through the power of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's merciful association, Venkata Bhatt, his brother Prabodhanand Saraswati, his son Gopal Bhatt Goswami, and all other members of his family were inspired to give up the worship of Lakshmi Narayan and became engaged in the exclusive devotional service of Radha and Krishna. Shri Gopal Bhatta Goswami took initiation from his uncle, Prabodhanand Saraswati. Proof of this is in Hari Bhakti Vilas. Gopal Bhatt's parents were very fortunate, for they surrendered themselves to the feet of Lord Chaitanya. They ordered their son to go to Vrindavan before they left this world, absorbed in meditating on the Lord.
Gopal traveled directly to Vrindavan, where he met with Roop and Sanatan. When Gopal arrived in Vrindavan, Rupa and Sanatan wrote to Mahaprabhu to tell him that Gopal has arrived in Vrindavan. The Lord was overjoyed and immediately wrote back, telling them to affectionately take care of him as though he were their own younger brother. Srila Sanatan Goswami compiled the Hari Bhakti Vilas and published it in Srila Gopal Bhatt Goswami's name. So Hari Bhakti Vilas was compiled by Sanatan Goswami but published in Sri Gopal Bhatt Goswami's name. Gopal Bhatt Goswami became one of the 6 Goswamis, but he always kept an attitude of meekness and humility. He was very humble. The Lord was overjoyed and immediately wrote back, telling them to affectionately take care of him as though he were their own younger brother. When Krishnadas Kaviraj approached him for permission to write Chaitanya Charitamrita, he granted it, but under the condition that he not write about him. Krishnadas Kaviraj Goswami could not go against the order of Gopal Bhatt and thus did nothing more than mention his name. Sri Jeev Goswami writes in the introduction of Shat Sandarbha that he wrote it on the basis of an earlier text by Gopal Bhatt. Srila Gopal Bhatt Goswami also wrote a book called Shat Kriya Sar Deepika, Light on the Essential Sacraments for the Vaishnavas. Sat Kriya Sar Deepika. Thus, his contribution to the Gaudiya Vaishnava literature was in editing the Hari Bhakti Vilas, preparing the notes for Jiva's Shat Sandarbha, and in compiling the Shat Kriya Sar Deepika. He also gave great joy to the community of devotees by writing a commentary on Vilva Mangal's Krishna Karnamrita. Amongst his disciples were Srinivasa Acharya and Sri Gopinath Pujari. One day Gopal Bhatt went to visit the town of Saranpur, not far from Haridwar. On that occasion, a simple devoted Brahmin engaged in his service in a most unpretentious manner. This Brahmin had no children but desired to have a son. Srila Gopal Bhatt Goswami knew the desire of the Brahmin and blessed him. He would have a devotionally minded male child. Brahmin promised Gopal Bhatt that he would give him his first son to be his servant and disciple. This son was Gopinath Pujari. It is said that Mahaprabhu had such affection for Gopal Bhatt that he sent him his own belt and kopeen. So Mahaprabhu sent him his own belt and kopeen as well as a wooden seat he had used. These items are still worshipped in the Radharaman temple by the current Sevikas. Shri Shri Radharaman. When Srila Gopal Bhatt Goswami was visiting the pilgrimage centers of northern India, he found a Shalagram Shila on the banks of Gandaki river. He took the worshipable stone form and carried it with him wherever he went. One day he thought that he would like to worship the Lord in a deity form so that he could expand his service. On the very next day, he found that Shalagram Shila had transformed into Radharaman. Bol Shri Radharaman Ji ki jai.
to fulfill the wish of his devotee. This deity stands alone without any form of Radha standing by his side. Instead, as a symbol of Radharani, a silver crown is placed on his left side. The story is also told in the following way. Gopal Bhatta Goswami developed a desire to serve Lord in the form of deity. The Lord within his heart knew his feelings. Through a rich merchant, he was provided with many beautiful items used in the worship of the deity, ornaments and clothes. Gopal Bhatt began to worry all these beautiful objects would be wasted because there was no way that he could use them unless he had a deity in human form. That night he put his Shaligram to rest, and in the morning he saw one of them had been transformed into Radha Raman deity. When Rupa and Sanata heard that Krishna had so mercifully appeared to Gopal Bhatta, they immediately came with other devotees for darshan. And when they saw him, they were ecstatic with love. The annual festival commemorating Radha Raman's appearance when he is bathed publicly takes place on full moon day of Vaisak. Radha Raman temple is considered one of the most important in Vrindavan. Srila Gopal Bhatta Goswami ended his earthly pastimes on Krishna Panchami of Ashada, that is today, 1585 AD. His Samadhi temple is behind the current Radha Raman temple. By reading Srinivasacharya's hymn to 6 Goswamis, Sat Goswami Ashtak, we can understand their glories. So this is our Guru Maharaj explanation of the biography of Gopal Bhatta Goswami. हम लोग अपने गुरु महाराज जी की लिखित जितनी भी किताबें हैं, जितनी पुस्तकें हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, उनको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो गौर पार्षदावली भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम गुरु जी के द्वारा लिखित वैष्णवों के चरित्र पाठ करते हैं। तो हमें पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि आपके गुरु जी का जो लिखा गौर पार्षदावली है, इसमें अनुगत्य धर्म है, इसलिए पुरी गोस्वामी महाराज भी यहीं से पढ़ते थे। तो हम गुरु तत्व पाठ कर रहे हैं। गुरु तत्व में हमने सुना प्रबुद्ध मुनि का आंसर, और निमि महाराज प्रश्न कर रहे हैं, और उसमें ये बात आई सदगुरु के क्या लक्षण है। तो सबसे पहले पद्म पुराण की बात आई, जिसमें शिव जी कहते हैं, देयर मे बी मैनी सो कॉल्ड गुरुज इन दिस वर्ल्ड टू स्क्वीज मनी फ्रॉम डिसाइपल्स, बट ए बोनाफाइड गुरु who can remove the drawbacks and sufferings of disciples is very rare. If we want quality, we cannot get quantity. Quality. Who is a bona fide guru? What are the characteristics? Tasmad gurum prapadyet jigyasu shreya uttamam shabde pare cha nishnat ब्रह्मणि उपासमर्या। गुरुदेव के दो लक्षण होंगे। पहला होगा शब्द ब्रह्म में निष्णात, यानी शास्त्र में पारंगति, वेल वर्स्ड इन ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स। गुरुदेव जो होंगे वो शास्त्र प्रमाण के द्वारा शिष्य के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा सकते। ये गुरु जी का एक लक्षण। और दूसरा लक्षण है
ब्रह्म अनुभूति, रियलाइजेशन ऑफ डिविनिटी। गुरुदेव होंगे अनुभूति प्राप्त। जब तक गुरुदेव अनुभूति प्राप्त नहीं होंगे तो शिष्य को कैसे वो अनुभूति करवा सकते। तो ऐसे गुरु मिलने बड़े दुर्लभ है संसार में, इतना आसान नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने अहेतु की कृपा करके हमारी योग्यता का विचार न करके हमें अपनी कृपा बरसाई और अपने शिष्य के रूप में हमें सौभाग्यशाली बना दिया। ऐसे गुरु मिलने बड़े दुर्लभ हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी एक सदगुरु के लक्षणों के बारे में लिखा कि वो शास्त्र में पारंगत हो और जो शिष्य है उसके मन के प्रश्नों को उत्तर देने में समर्थ हो। वो दूसरा है कि उनके अंदर अनुभूति हो, भगवत अनुभव प्राप्त, शुड हैव रियलाइजेशन ऑफ द डिविनिटी। क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल स्क्रिप्चर्स का नॉलेज तो बड़े लोग जिनकी स्मृति तेज है वो धड़ाधड़ कितने श्लोक बोलते हैं। दक्षिण भारत में गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों को मिनिमम 5000 संस्कृत के श्लोक याद करने पड़ते। 5000 श्लोकास मिनिमम दे हैव टू रिमेम्बर। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज ये भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। विदाउट हैविंग प्रैक्टिकल रियलाइजेशन the guru cannot give proper advice and direction in accordance with eligibility of disciple। तो हमारे भक्तों की ये बात रहती है, कोई भी उलझन हो, कोई भी परेशानी हो, वो गुरु जी से उसके बारे में हल जानना चाहते। क्योंकि मैं आजकल देखता हूं, आजकल के जो हमारे कई लोग गुरु बन गए हैं, वो भक्तों को बिल्कुल संसारिक उपाय बताते हैं, संसारिक बातें करते हैं, दुनियावी तरीके की बातें करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे सफल हो जाओ, फिर मठ की सेवा करो। ऐसा क्या मतलब समझ नहीं आती। लेकिन जब तक उनको स्वयं अनुभव नहीं होगा वो कैसे बताएंगे किसी को। तो इसलिए अनुभूति प्राप्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु का। लेकिन भक्त को कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव को अनुभूति है कि नहीं, क्योंकि भक्त को अनुभूति नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा, बड़ा मुश्किल। इसके बारे में जान, मुझे याद है चंडीगढ़ मठ में एक बार गुरु महाराज जी का कमरा फर्स्ट फ्लोर में है, रूम नंबर शायद 23, लंबा हॉल। तो वहां हर समय भरा रहता था। गुरु जी के पास हम बैठे रहते थे, हिलते नहीं थे, कहीं और जाते नहीं थे। हमने कभी चंडीगढ़ का रोज गार्डन नहीं देखा, रॉक गार्डन नहीं देखा, कभी बाहर निकल के नहीं देखा, मठ से बाहर नहीं गए। गुरु महाराज जी के कमरे के आगे पीछे ही चक्कर निकाले। तो गुरु महाराज जी के पास बैठे बैठे हमने देखा कि एक कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आए, लंबे चौड़े। वो बड़े प्रश्न करने लगे, लेकिन बड़ा उस समय रश था। गुरुजी के पास समय नहीं था उनकी तरफ ध्यान देने का। लोग आ रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये व्यक्ति गुरुजी के पास आके बार बार प्रश्न करता है कि गुरुदेव आपने क्या भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं? तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, तो ये क्या प्रश्न कर रहा है। और फिर गुरुजी को पूछा, गुरुदेव क्या आपने भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं? तब गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया, फिर उसने पूछा क्या आपको दर्शन हुए हैं? तब गुरु महाराज ने धीरे से उनको एक बात कही, अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या आप मेरी बात को सच मानेंगे? तो ये बात बड़ी गंभीर है। कई लोग कहते हैं मुझे भगवान के दर्शन हुए, मुझे सपन में भगवान ने ये कहा वो कहा। तो ये जिनको अनुभव होता है उनके लक्षण होते हैं। अगर किसी को भगवान दर्शन देंगे
तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होनी चाहिए भगवान का नाम सुन के। वाणी गदगद होनी चाहिए भगवान का कीर्तन करते हुए। पुलक कंप होना चाहिए, अष्ट सात्विक विकार शरीर में प्रकाशित होने चाहिए भगवत नाम के उच्चारण में। ये हैं लक्षण बाहर के, और अंदर के लक्षण हैं अंदर से भगवान के प्रति विरह संतप्त होना चाहिए। तो ये महाप्रभु ने भी अपने षष्ठ और सप्तम श्लोक में शिष्टाष्टक में लिखा। बाहर के लक्षण, सिद्धि के लक्षण क्या हैं? जो व्यक्ति भगवत अनुभूति प्राप्त है उसके बाहर के लक्षण होंगे नयनम दलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये है, उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी भगवत नाम उच्चारण के साथ। अष्ट सात्विक विकार प्रकट होंगे शरीर में। ये हैं बाहर के लक्षण जो देखे जा सकते हैं, और कुछ लक्षण देखे नहीं जा सकते, वो उनके अंदर चलते हैं। वो क्या है? युगायितिम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायित जगत सर्व गोविंद विरहेन में। अभी क्या हो रहा है? गुरु जी के अंदर विरह हो तो गुरु जी को संसार अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूं, गुरु की गद्दी में लोग बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इंटरनेट में लगे हुए हैं। तो कैसे कहा जाए कि इनके अंदर वो अनुभूति के लक्षण हैं? इसलिए गुरु के अंदर ये लक्षण है कि नहीं, ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो उस व्यक्ति को गुरु जी ने कहा जिसके अंदर लक्षण, जिसके अंदर जिसको दर्शन होंगे वो बता नहीं सकता कि मेरे को दर्शन होंगे, वो इसकी घोषणाएं नहीं करेगा। ये गूंगे के गुड़ का स्वाद है, ये अंदर ही अंदर अनुभव होता है, लेकिन लक्षण सबको दिख जाते हैं। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड गुरुदेवा, मॉर्फोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल। एक है बाहर का उनका दर्शन, एक है उनके भीतर का भाव। लेकिन बद्ध जीव ये समझने में असमर्थ है। जैसे सूर्य की रोशनी के बिना हम सूर्य नहीं देख सकते, इसी तरह गुरु की कृपा के बिना हम गुरु जी की उस अनुभूति को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। गुरु जी कृपा करेंगे तब हम उनकी अनुभूति को महसूस कर पाएंगे। लोग तो 2 मिनट में आपकी क्लास लगा देते हैं। आपको दर्शन हुए? भाई हुए हैं, नहीं हुए हैं, आपको क्यों हम बताएं? वाई? आप कोई हाई कोर्ट के जज हैं? ये पूछो कि मुझे कैसे दर्शन होंगे, इसका जवाब मांगो। गुरुदेव भी स्वप्रकाशित हैं, भगवान भी स्वप्रकाशित हैं। विश्वनाथ ठाकुर जी कहते हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया है कि एक मेरे जैसा बद्ध जीव, एक जो साधक, नया नया साधक, तो कैसे गुरु जी को पहचाने। तो एक बात गुरु जी में अगर वो देखे तो पहचान सकते हैं। वो क्या है? गुरु जी में 2 चीजें नहीं दिखेंगी। एक, गुरु जी में क्रोध नहीं दिखेगा, एक सदगुरु के अंदर क्रोध नहीं दिखेगा। और दूसरा, एक सदगुरु के अंदर लालच नहीं होगा, लालची नहीं हो सकता। एंगर एंड ग्रीड, ये जो मुख्य बात ये है। बाकी बड़े सारे जो
नेगेटिव चीजें हैं वो तो नहीं होंगी, लेकिन गुस्सा भी नहीं होगा और लालच भी नहीं होगा। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह सब हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एक ईर्ष्या को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, मात्सर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, मैलिस को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारा लग सकता है। कैसे, वो बता रहे हैं। काम कृष्ण कर्मापरने, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लब्ध बिने, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करिबा यथा तथा। देखिए, भक्त बहुत समझदार है। वो जानता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह को करोड़ों जन्मों से वो सिर पे बोझ उठा के बैठा है, एक जन्म में नहीं जाएगा, तो इसको भगवान की सेवा में लगा दो। काम कृष्ण कर्मार्पणे, kama, the passion for fulfillment of desires, should be diverted towards desire to serve Shri Krishna. बड़ा काम है तो भगवान की सेवा की कामना करो। क्रोध, एंगर शुड बी यूज्ड अगेंस्ट दोज हु आर हॉस्टाइल टू डिवोटीज। किसी भक्त के ऊपर जो कोई अत्याचार करता है उस पे क्रोधित हो जाइए, लगाइए क्रोध को वहां। Greed should be employed to increase the desire to hear हरि कथा। ये जो लालच है, डॉलर्स, रुपीस, लालच, इसको लगा दीजिए हरि कथा में लालच। हरि कथा में लालच होना चाहिए। मैं रोज यहाँ गुरु जी की अहेतु की कृपा को बार बार दंडवत करते हुए गुरु जी की वाणी को याद करने का प्रयास कर रहा हूं गुरु कथा में। लेकिन इस कथा में अगर हमारे आप जैसे श्रोता ना हो तो ये कथा नहीं पॉसिबल। तो ये जो आपका आग्रह है कथा सुनने में, ये सबसे बड़ा लक्षण है एक एडवांस्ड डिवोटी का। जो भक्ति राज्य में एडवांस स्टेज पे होते हैं उन्हें ही हरि कथा, गुरु कथा श्रवण करने की इच्छा करते हैं। और जिनको गुरु जी से प्यार है वह गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं, गुरु जी की वाणी के बारे में सुनना चाहते हैं। तो हमारे नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ को, लालसा को हरि कथा श्रवण में लगा लो। साधु संग, साधु मुख विगलित हरि कथा, मोह इष्ट लब्ध बिने। और मोह है इन्फैचुएशन, should be about not being able to utilize the valuable time of this precious human birth for worship of Shri Krishna up till now. क्या कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर? कह रहे हैं मोह इष्ट लब्ध बिने। ए भाव कि मैं अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा हूं, मेरा जीवन चला गया, मैं भगवान की सेवा में इस जीवन को नहीं लगा सका। ये प्रीशियस ह्यूमन बर्थ भगवान कृष्ण के भजन में नहीं लगा सका, अभी तक नहीं लगा सका। इसके लिए मोह होना चाहिए, इन्फैचुएशन। ये मोहग्रस्त व्यक्ति, हाय मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, हरि हरि विफले जन्म गोवाइना, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइन। तो infatuation should be about not being able to utilize the valuable time of this precious human birth for worship of Shri Krishna up till now. मद कहते काम क्रोध लोभ मोह, मद। मद किसमें लगाना?
मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करिब यथा तथा। मद होता है मैडनेस। मैडनेस शुड बी आफ्टर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, पियाइया प्रेम, पियाइया प्रेम मत करी मोरे शुन निज गुण गान। पियाइया प्रेम मत करी मोरे शुन निज गुण गान। The madness should be after singing the glories of Shri Krishna. हे कृष्णा, आप मेरे मुख से ये डिलीरियम सुनो। हे गुरुदेव, ये मेरे से अपना गुणगान सुनो। जैसा तैसा मैं बोल रहा हूं, आप सुनो, कृपा करो। पहले अपनी भक्ति के रस में मुझे एकदम भर दो, और फिर उसके बाद उस रस के नशे में जब मैं उल्टा पलटा बोलूं तो आप श्रवण करो गुरुदेव। Madness should be after singing the glories of Shri Krishna. Even Narad Goswami used anger on sons of Kuber. देखो क्रोध को किसने कहां पे यूज किया? हमने कहा ना, क्रोध भक्त द्वेषी जन। नलकुवर मणिग्रीव को उद्धार करने के लिए नारद जी ने उनको श्राप दिया। According to Gita, the cause of anger is obstruction to fulfillment of one desire. जब काम में विघ्न होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, गीता में कहती है। A real devotee cannot have any desire of his own except service of Shri Krishna. So in a pure devotee, there cannot be any possibility of origination of such anger due to hindrance to worldly desires. तो जो शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर दुनिया के कोई इच्छाएं नहीं होती, कामनाएं नहीं होती, इसलिए क्रोध का कोई उनके अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो क्रोध करते हैं तो भक्त द्वेषी जन, भक्त के जो द्वेषी लोग हैं उनके प्रति क्रोध का प्रयोग करते हैं। तो ये गुरु तत्व में पेज नंबर 51 पे हमने आज रोका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।